General Mystery has a rich experience of United Nations peacekeeping, having been an observer in Liberia as well as in South Sudan. He is presently the General Officer commanding Delhi area. A smart salute by the General Officer commanding Delhi area to the Supreme Commander of the Armed Forces. In history's distinguished pages, we will play to help build a strong nation every single day. For we are the nation, we are the force, we are the strength, we change history's course. Following the parade commander, gradually arriving in front of the saluting dais, the parade second-in-command, Major General Rajpal Punia, Youth Seva Medal, Chief of Staff, Delhi area. An alumnus of the National Defence Academy, Khandakwasla, and the Indian military team, Dehradun, the General Officer was commissioned into 14th Mechanized Infantry Battalion. He was awarded the prestigious Youth Seva Medal during Operation Kukri while commanding a company as part of the 5th Battalion, the 8th Gurkha Rifles, in a United Nations peacekeeping operation in Sierra Leone. He has attended the Defence Services Staff College at Wellington, the Higher Defence Management Course at Hyderabad, and the prestigious National Defence College course in Bangkok, Thailand. The officer had the proud privilege of commanding his battalion in high altitude area in Jammu and Kashmir, and has commanded a mountain brigade in Arunachal Pradesh. A smart salute by the parade second-in-command to the Chief of the Army Staff. After a successful tenure at the General Officer commanding of Armored Division, the General Officer is presently the Chief of Staff, Delhi area. अपनी आंखों में झांको तुम, नमी नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर राख नहीं है, लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो, इस चिंगारी को शोलों में ढाल दो, जहां चुनौती का बादल है शोला एक उछाल दो। जी हाँ, इसी बात का उद्घोष करते हुए हमारे गर्व परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। परमवीर चक्र से सम्मानित विजेता है सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार। अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल सारस के पीठावाला, कर्नल जसवीर सिंह रैना, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्री राम कुमार, नायब सूबेदार ऑनरी छेरिन मुट्टू, श्री गोविंद सिंह, श्री भूरेलाल। इनकी वीरता को कुछ शब्दों में कह देना कुछ इस तरह से है मानो सूरज को मुट्ठी में करना हो। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है, और अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। और अब देवी और सज्जनों में